Okay, now we are going to start with this exercise 6.4 here. Look at this question number 1. In this question 1, let ABC is similar to DEF in their areas. Area given hai, ABC similar hai, and EF is given and BC we need to find. So we have discussed a theorem. That theorem says that the ratio of the area of the similar triangle is equal to the square of their corresponding sides. राइट सो यहाँ पे क्या होगा BC का BC अपॉन EF के स्क्वायर के इक्वल होगा दिस थिंग वी हैव डिस्कस नाउ पुट ऑल द गिवन वैल्यूज इन दिस क्वेश्चन so it is given 64 it's given 121 is equal to BC we need to find in this question and EF is given 15.4 so 15.4 square so if I shift this square on this side तो it become square root स्क्वायर को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 8/121 और इधर हो जाएगा BC अपॉन 15.4 8 का स्क्वायर सॉरी इट्स नॉट 8 इट्स 64 इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 आएगा 64 का स्क्वायर रूट 8 121 का 11 15.4 इधर शिफ्ट कर दिया मैंने इज इक्वल टू BC this 11 cancel this 11 1 जा 11 11 4 जा 1.4 8 4 जा 32 8 1 जा 8 9 10 11 so BC is equal to 11.2 centimeter so basically ये थ्योरम हमने अप्लाई की है आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल so this is the theorem I have applied so this theorem we have discussed ये सारी साइड्स का स्क्वायर के इक्वल आएगा AB अपॉन D का स्क्वायर के इक्वल भी आएगा एंड AC अपॉन DF के स्क्वायर के इक्वल भी आएगा but we need only this thing so that's why I have written only this thing right so the proof of this theorem we have already discussed and we have discussed in detail about this theorem so this is the application of this theorem right I hope this question is clear to you now look at this question number 2 here in this question diagonal of a trapezium AB parallel to intersect each other at O if AB equal to 2CD find the ratio of the area of the triangle AOB and COD so let me draw the figure first for this question so trapezium look like this so this side is A B C D right and diagonal intersect each other at O diagonal O पे intersect कर रहे हैं so this is the point O here right now we need to find out the area of to find area of triangle AOB upon area of triangle COD right so this thing we need to find so we know that where is AOB AOB नीचे वाला triangle है and COD ये वाला triangle है right so can I say that these two triangles are congruent similar not congruent similar Yes, sir. because angle AOB is equal to angle DOCOD equal to y Vertically opposite. yes vertically opposite angles and angle I can say that angle BAO is equal to what this Angle OCB. angle OCB why Alternate interior. yes alternate interior angle absolutely right so therefore we can Sir, वो OCD है. OCD yes I have written wrong so this is not OCB this is OCD right so I can say that these two triangles are similar by angle similarity criteria right so if these two triangles are similar so the ratio of the sides that theorem we have discussed AB upon CD इसकी जो sides का ratio के square के equal होगा area what is AB given here AB यहाँ पे 2CD given है तो 2CD मैंने लिख दिया यहाँ पे upon नीचे CD है तो it's square so here CD cancel this CD so what will be the answer in this case ratio is 4/1 I hope this question is clear to you all now look at this question 3 in figure 6.44
ABC DBC. सर आप एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पे वापस जाओ क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, हु इज दिस? सर तनिष्का। Kaniska. Okay, carry on. यस सर डन। Okay. Now look at this question 3 here. In figure 6 point ABC DBC are the two triangle on same base BC. कहाँ है ABC? ABC इधर है और DBC इधर है और सेम बेस BC के ऊपर ये दोनों ट्रायंगल लाई कर रहे हैं, एक ऊपर इसके और एक नीचे। AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD ने O को इंटरसेक्ट O पे इंटरसेक्ट किया है BC को, सो दैट एरिया ऑफ ABC इक्वल टू AO अपॉन DO। So this is we need to prove. Now let us take a proof. So area of ABC का एरिया DBC के एरिया जो है उसके इक्वल होगा AO अपॉन DO के, AO अपॉन DO. So basically this thing we need to prove in this question. We have to do some construction here. So construction हमें करनी होगी इस क्वेश्चन में, directly we are not able to solve it. So the construction is, so we have to draw the perpendicular from A to on this side, on this. तो इस पे एक perpendicular हमने बनाया and from the point D draw another perpendicular on BC. So BC के ऊपर दो perpendicular हमने draw किए हैं, one is from D and one is from A. So let's suppose this is M, this is N, right? So whatever the construction I have done is AM perpendicular to BC perpendicular to DN, right? Now after this if I need to find out the area of triangle ABC, area of ABC का एरिया मुझे फाइंड करना है. So what is the area of ABC? हाफ इंटू बेस, बेस BC है और हाइट क्या है यहाँ पे ABC ट्रायंगल में, हाइट इज AM. yes it's AM. Now look at this area of triangle. If I need to find out the area of triangle DBC, what is the area of triangle DBC? It's equal to half into base again BC and height is DN. height is DN. Okay. So if I divide these two areas, जो मुझे find यही करना है, अगर मैं इनको divide कर दूं तो divide we can divide like this on both the sides, right? So half half cancel, BC cancel, remaining is AM upon DN. लेकिन हमें लाना है AO upon DO. Now our next task is AM upon DM को AO upon DO के इक्वल कैसे करें? So how to make it equal? So हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ओम एंड ट्रायंगल डोन. सो डोन को ओम के इक्वल करना है, डोम को ओम के कॉन्ग्रुएंट करना है. तो मैं एंगल M को अगर एंगल N लिख लूं तो व्हाट इज द रीजन? 90 degree. 90 degree. And if I write angle AOM is equal to angle DN, sorry not AOM, AMO. AMO तो हो गया. AOM is equal to angle DON. So what is the reason for this? Vertically opposite. Yes, it's vertically opposite angle. Basically, I'm talking about these angles, this one and this one. So these two angles are vertically opposite angle, right? So can I say that these two triangles are congruent now? So triangle AOM is congruent to triangle DON, right? By which rule? By angle similarity criteria. Now, after that, can I say that the ratio of the sides AO upon DO is equal to OM upon ON is equal to AM upon AN? Because the corresponding sides of the similar triangles are in the same ratio, right? तो यहां से आप देखो AO ये किसके इक्वल आ रहा है, AM अपॉन DN किसके इक्वल आ रहा है, AO अपॉन DO के ले सकते हैं. Now
look at this now from equation 1. Suppose this is 2, put 2 in 1, 2 को 1 में put कर दीजिए. So then we have obtained area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to, at the place of AM upon DN, can I put AO upon DO from equation 2? Yes or no? Yes, sir. So this is what we need to prove. A upon DO. So I hope this question is clear to you all now. Move to the next question. Look at this question number 4 here. If the area of the two similar triangles are equal, so let me write the given condition first. Suppose there are two triangles and they are similar also. So the first condition is triangle ABC is similar to triangle, suppose it's PQR, and their areas are also equal. Suppose first area first similar है, area लिख दिया मैंने यहाँ पे, फर्स्ट सिमिलर है फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन है जो एरिया है ABC का, that area of ABC is equal to the area of PQR. This is the second condition given. Now what we need to prove in this question is to prove that they are congruent. Congruent prove करने के लिए तीनों sides equal होनी चाहिए. This is the topic of class 9th. So triangle ABC must be equal to triangle, all the sides must be equal to PQR. अब देखिए आप area of triangle, if these two triangles are similar, so what is the property of the area of triangle ratio is equal to, anyone? साइड्स के रेशियो का स्क्वायर. तो क्या होगा साइड्स का रेशियो? AB अपॉन PQ स्क्वायर, राइट? BC अपॉन QR स्क्वायर, राइट? एंड AC अपॉन PR square, right? Now what is given in the question? Look at the second condition. What is the second condition given in the question is, at the place of area of ABC, can I write area of PQR की जगह पे ABC लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. And this thing is same. So this area cancel this area. So what I have obtained here? I have obtained 1 on this side. AB upon PQ square. So if I select these two only, अगर इन दोनों को लूं मैं, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? So I can write PQ square is equal to AB square. If I shift this PQ square on this side, so from here I can get PQ equal to AB, right? Similarly from here what I got, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? BC equal to QR, and from here what will I get? AC equal to PR. ठीक है, समझ में आया? तीनों साइड इक्वल हो गई हैं. So therefore we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR or not. By which rule? SSS congruence rule. Is this question clear to you all? Yes, sir. Okay. Now let's move to the next question. Look at this question number 5 here. In this question 5, D, E, F are respectively the midpoint of side AB, BC, C of triangle ABC. Find the area ratio of the area of DEF and ABC. Let me draw the figure here. So ये ट्रायंगल है ABC, इसके मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है D, इसका मिड पॉइंट है E और इसका मिड पॉइंट है F. So if I join these midpoints, if I join these midpoints, so what I have obtained and what we need to find. So to find
अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. So this is we need to find in this question. So think it and tell me what the approach we have to apply here. क्या करें? Do you remember the midpoint theorem in class 10th, class 9th? There's a theorem, Yes, that sir. theorem is called as Yes, sir. midpoint theorem. Okay. Yes, sir. So we are going to use that midpoint theorem here. Now, if D and E are the midpoint, so what the midpoint theorem says? DE is D. DE is half. DE is the half of AC. Okay. Yes. So it's not. It's. I have written DE. So let me write it as DF. So if D and F are the midpoints of and lying on the two different sides of the triangle. So midpoint theorem says that DF. The first thing it says that DF is parallel to BC. And second thing, this theorem says that DF is half of BC, right? I hope you all remember this theorem. अगर DF BC के पैरेलल है तो DF BE के भी पैरेलल होगा. Am I right? Yes, sir. And if E is the midpoint, suppose ये X है यहाँ पे, तो ये भी X होगा. Yes, sir. Can I write at the place of BC 2X? So BC की जगह पे क्या मैं 2X लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ. और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ से मुझे DF किसके इक्वल मिल जाएगा? BE के इक्वल लिख सकता हूँ. DF इक्वल टू BE. अगर ये हाफ है, BC 2X है, तो DF कितना होगा? X. So can I write DF is equal to BE? Am I right? क्या मैं Yes, ऐसा sir. लिख सकता हूँ? Okay. And if you remember a theorem, if the two sides of a quadrilateral are parallel and equal, if a pair of two sides of a quadrilateral are parallel and equal, so what is the property of that quadrilateral become? Parallelogram. So therefore DFEB, जो DFEB आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, so DFEB is a parallelogram. So DFEB क्या हो गया? Parallelogram हो गया, right? DFEB is a parallelogram. Similarly, can I say that DFCE is a parallelogram? ठीक इसी तरह से DFCE is a parallelogram होगा. And वो जो ऊपर बन रहा है AFED is a parallelogram. तो मैं इनको पैरेललोग्राम बोल सकता हूं. अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या आपको एक थ्योरम याद आ रही है? पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है इक्वल एरिया में डिवाइड करता है दो ट्रायंगल्स को. Yes, sir. So can I write this triangle? Area of triangle BDE is equal to area of triangle DEF. इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल होगा. And similarly, if this is a parallelogram DFCE ये वाला है, तो इसका एरिया इसके इक्वल होगा. Area of DEF is equal to area of CEF. And can I write like this from this AFED? जो AFED है, इसमें मैं क्या एरिया ऑफ DEF का एरिया क्या इसके इक्वल लिख सकता हूं? ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 and 2, 3, from equation 1, 2 and 3,
इन तीनों इक्वेशन से आई कैन से दैट एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF, इक्वेशन 1 से आ रहा है। अब DEF का एरिया देख रहे हैं आप, DEF का एरिया किसके इक्वल है, CEF के, सो एरिया ऑफ CEF हो जाएगा एंड इज इक्वल टू DEF किसके इक्वल है, AFD के, तो एरिया ऑफ AFD हो जाएगा, ट्रायंगल AFD। तो अब इस ट्रायंगल में चारों एरिया इक्वल हो गए हैं, देख पाएंगे अगर ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में चारों एरिया इक्वल हो गए हैं। सपोज ये एरिया यहाँ पे इसका एरिया, इस ट्रायंगल का जो एरिया, चारों का एरिया, इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, ठीक है, चारों के एरिया इक्वल हैं। सो कैन आई राइट लाइक दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC का जो एरिया होगा उन चारों का एरिया मिला के आएगा, राइट। सपोज A प्लस A प्लस A प्लस A, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, A प्लस A लिखा है जो मैंने, A प्लस A की जगह पे मैं यहाँ पे DEF भी लिख सकता हूं, तो एरिया ऑफ DEF, तो DEF, ये भी DEF, इसको भी DEF से रिप्लेस कर दिया क्योंकि चारों के एरिया इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 एरिया ऑफ DEF हो जाएगा, राइट। नाउ अब आप इसको रीअरेंज कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, so shift it on this side, so it become 1/4. So this is the answer of this question. Is this question clear to you all? So सबसे पहले हमने क्या किया, इन सारे ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल प्रूव कर दिए, तो जो एरिया ABC का और होगा तो 1/4 एरिया होगा, राइट।